Yeah. Hello. Good morning. Hello. Good morning. How are you? Yeah. You are just, yeah, are you able to hear me? Are you able to hear me, please? आप unmute कर दीजिए. Mamu Kordia is connecting to audio and cannot hear you yet. Connected to audio. Hello, your mic is switched off. Please, mic को on कर दीजिए. That mic sign is there. उसको press कर दीजिए. Hello. Hello. Yeah. Good morning. Good morning, sir. Good. I'm sorry to disturb you early in the morning because want of time in the night. That is the reason. You are from which state? Sir, Rajasthan. Very good. You have not sent your biodata, doesn't matter. We will go without that. Now, please tell me what is your degree? So electronics and communication. Oh, acha, I think you told me orally that you have studied electronics and communication. Which year did you complete it? So 2017. अरे बाबा, बहुत दिन पहले. इसका बाद में क्या करते थे? सर उसके बाद में शादी हो गई. कब शादी हुआ? तो 2018 में. अच्छा, ठीक है. Now you have a boy or girl child? सर अभी तो मैं प्रेग्नेंट हूँ. 7.5 months. अरे बाबा, oh. Doesn't matter. Good. That's nice. Only thing is, after delivery, you'll be joining. Assuming they Yes, sir. get selected, you will be joining after delivery. What is your husband doing? Sir, he is in Nagar Nigam, civil engineer. Acha, civil engineer. Acha, he is working in government, public sector undertaking? Yes, sir. Very good. Site. Very good. What is your father? From where? Which city are you? From which city are you coming? Sir, भिलवाड़ा. Sir, proper भिलवाड़ा से हूँ. पिताजी क्या काम करते हैं? Sir, civil engineer है पापा. Oh, he is also civil engineer, first class. And आपने क्यों ECE लिया? सर एक्चुअली मुझे भी सिविल इंजीनियर ही लेना था. लेकिन भिलवाड़ा में ब्रांच नहीं थी. अच्छा, that discipline was not there in that college. Yes, sir. Doesn't matter. Good. Now, since when are you preparing for bank exams? So 2020. 2020. Okay. Good. So, any other exam you appeared for interview? Yes, sir. So not interview. Sir, RRB clerk. You have written main, or you have been selected as main or RRB clerk? Yeah. So Rajasthan Marudra Gramin Bank. अच्छा, you have been मेरा भी selected. document verification हो गया. Very good. Congratulations. That's one good thing. You have some job on hand. You can mention about this in the interview. Okay. Now, So तो फिर cross questions. Cross questions का कुछ नहीं आएगा. So you have got RRB. उधर से आप क्यों इधर बाहर आना चाहते हैं? यहाँ आने से तो हम लोग इधर उधर डालेगा आपको. राजस्थान का अंदर में भी डालेगा, नहीं होने से बाहर भी डालेगा. आपका फैमिली का वो ठीक होगा, ऐसा पूछेगा. Mobility. Yes, You have to manage that and say, yes, I will move over to any other place. It's not a problem for me. Okay, sir. Good. Did you not appear for IBPS RRB PO interview? No, sir. Oh, So mains exam में 7 marks से रह गई मैं. Oh, main 7 marks. तब तो बहुत बड़ा mark difference. हाँ. Okay, doesn't matter. Now, in this examination, how many questions did you answer in the main test? So in which examination? In the SBI main. Okay. Yeah. How many questions have you answered in the SBI main examination?
75 sir. Only? Hey, bhai. Oh, acha, acha. Good. It's okay. Fine. Now that means you will be only in the border, you know. Cutoff ka ज़्यादा maximum 1 or 2 marks ऊपर होगा बस, or it may be exactly near cutoff होगा. इसलिए आपको performance and interview has to be very good. Okay sir. Good. Now, what do you know about banking? Banking, of course, you are going to join RRB. अच्छा, उस Yes sir. RRB का बारे में थोड़ा points बता दीजिए. उस RRB का sponsoring bank कौन है? Sir SBI. Oh, अच्छा. Yes sir. फिर आप इधर SBI आना चाहते हैं, no problem. And ये officer होने से तो आपको this is a transferable job. Will your family be able to help you, and who will help you in taking care of your child and all that after delivery? Yes sir. Sir, they will definitely actually sir, they will definitely allow me to join the SBI as a PO, Hmm. and they will take care of my child. Who they will का मतलब in-laws Sir, or my in-laws, my in-laws. excellent. In-laws will support you in this regard. Yes sir. Very good, very good. Now, banking स्टेट बैंक का बारे में आपको मन में क्या क्या पॉइंट्स आए बताइए. So this is a brand and reputed bank, Hmm. and it is available all over country, Hmm. and this is the fifth largest employer of India, Mhm. and it comes under a 500 Fortune company, Hmm. and Hmm. and there are a lot of perks and allowances Hmm. in the SBI bank. Mhm. Good. Now, uh, how do you imagine yourself after, say, 5 years from now? Imagine that you are selected in SBI PO as an officer. Yes sir. How do you imagine yourself after 5 or 10 years? Will you be working, or after the child birth आपको कुछ problem होगा ना, क्या आप manage करेगा? No sir, I will definitely manage myself. Hmm. I will take care I will take care of my child, Hmm. and I will separate the my professional and my personal life, Hmm. and Good. मैं अपने career growth को मैं obviously मैं आगे ही रखूंगी, Hmm. because I'm very practical in daily life. अच्छा. Who is your role model? My father. अच्छा, पिताजी का he is a civil engineer. Yes And sir. which quality of his you like very much? Sir, he is very hardworking and very honest, Hmm. and मतलब कि वो मुझे ये बोलते हैं कि तू मेरा बहादुर बेटा है और कभी हार मत माना, तो दिस रियली मोटिवेट्स मी. Hmm. So his hard work makes you Yes. have a soft, take him as your role model. Yes sir. Correct? Okay. Yes sir. Good, good. अच्छा, आपका number क्या is there any other number you have? 78144? No. No, you Sir, don't have. And you have any other number other than this also? No. no sir. Okay, doesn't matter. Doesn't matter. Fine. Now, now that you are coming to State Bank of India, so what Yes do you sir. think is the job role of an officer? Sir, officer sir, sir, this is a आप हिंदी में wait. बाल कर दीजिए. If you are comfortable in Hindi, I think you are choosing Hindi medium, correct? Yes sir. अब बताइए, हिंदी में बता दीजिए, कोई तकलीफ नहीं, हम समझेंगे. I can follow. हम तो क्वेश्चन इंग्लिश अंग्रेजी में पूछेगा और हिंदी में पूछेगा, आप हिंदी में बता दीजिए. आपको जॉब रोल क्या है? Sir, as a probationary officer, sir वो daily sir वो recruitment करता है, हम्म. employer की recruitment करता है, हम्म. और सर जो भी हमारे मीटिंग्स वगैरह वो चीज वो ऑर्गेनाइज करता है, कस्टमर से डायरेक्टली इंटरेक्शंस होते हैं, उनकी ट्रांजैक्शंस प्रॉब्लम्स को वो हैंडल करता है. हम्म. I think you are not prepared on this question, correct? Yes sir, actually I have written, but
I can't recall. अच्छा अच्छा. Job profile. What is the job role of a probationary officer? A probationary officer is an officer, not pro, अच्छा, 1 minute. Probation officer in a bank. Yeah, it is coming as court. Yeah, responsibilities of probationary officer: planning, Yes, sir. budgeting, marketing, loan processing, approval, investment management. More or less, he is there to assist the branch manager in the day-to-day working. He will be in charge of authorizing payments. He'll be in charge of receiving, making receipts, authorizing receipts, and he'll be taking supervision of the work being done by by the clerical staff. And also, he will be helping the branch manager in deposit mobilization, in the recovery of NPA, and in, say, other bank assurance services like, say, life insurance, general insurance, and mutual fund canvassing, and also, say, in a matter of helping the branch management in, say, operation of lockers and all that. पूरा काम ये देख लेगा and manager के लिए पूरा assistance देगा. Yes, sir. Correct? Okay, sir. Good. आप ट्राई कर दीजिए, अभी बोलिए. What is the job role? आपका क्या काम होगा बता दीजिए. आप बैंक में ज्वाइन कर दिया, आपको क्या क्या एक्सपेक्ट करेंगे बैंक से, बताइए. So recovery of NPA पहले इसको मत बोलो and ना, वो बाद में बोलो. पहले डे टू डे काम को बोल के लास्ट में जाओ उसको. yes, sir. Sir, ये कस्टमर के साथ एम्प्लॉयर के साथ मीटिंग्स वगैरह ये चीज ऑर्गेनाइज करेगा. और सर कस्टमर कंप्लेंट्स को हैंडल करेगा. और हमारे बैंकिंग में सर जो सर कासा रेशियो भी बोल सकते हैं हम, कासा रेशियो को मेंटेन करेगा. No, he is not responsible for CASA ratio. अच्छा. CASA ratio is coming out of its own position, but he helps in the branch in maintenance of deposits, increasing of deposits, by talking nicely to the customers and explaining them about the various schemes, authorizing of the opening of accounts and all that. ठीक है? ओके सर. आप क्यों फील करके बात नहीं करते हैं? क्यों? आई नो मॉर्निंग सुबह में आपको तकलीफ होगा, फिर भी आप फील करके बोल दीजिए ना, व्हाट यू विल बी डूइंग एज एन ऑफिसर. खाली ऐसा बताने से हो जाएगा जी. हम एज एन ऑफिसर, हम तो ब्रांच मैनेजर के लिए पूरा हेल्प करेगा इन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन एंड इन डे टू डे वर्किंग इन द ब्रांच, एंड क्लरिकल स्टाफ का वर्क भी सुपरवाइज करेगा, और KYC नॉर्म्स फॉलो सब करेगा. और दूसरा एंसिलरी सर्विसेज लाइक, से बैंक अश्योरेंस सर्विसेज, उसमें भी मैनेजर के लिए हेल्प करेगा. बाई चांस हमको लॉकर इंचार्ज डाल दिया तो हम लॉकर को ऑपरेशन भी देखेगा, एंड मेरे को बाई चांस लोन्स में डालने से तो लोन प्रोसेस में हेल्प करेगा, डॉक्यूमेंट्स लेगा, उसको फॉलो अप करेगा, NPA होगा तो उसको भी फॉलो अप करके रिकवर करेगा. And on the whole, I will try to improve the efficiency of the branch. Okay, sir. Okay, nice. So I will practice it more. Yeah, you can see this in video. I will post this after 15 minutes in the video. Okay, You sir. can see that. Very good. अच्छा, ये point बता दीजिए. What is the difference between, you were talking about CASA ratio, CASA ratio. What is Yes, CASA sir. ratio? What is CASA ratio? So it is the ratio saving account to current account to saving account. Wrong. Totally wrong. CASA ratio का मतलब current account plus savings account divided by total deposit Total into 100. deposit Into 100. अभी बताओ, what is CASA ratio? So current account plus saving account upon total deposits into 100 into 100 is CASA ratio. ज्यादा CASA ratio होने से एक ब्रांच को बढ़िया है, और कम CASA ratio होने से एक ब्रांच को बढ़िया है. हेलो सर अगर I think ज्यादा CASA ratio होने से बढ़िया है, क्योंकि हमको पैसा चीप पैसा मिलेगा. करंट अकाउंट में इंटरेस्ट कुछ नहीं है,
सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट देना पड़ता है बहुत कम 2.75 2.5%, इसलिए बैंक को पैसा चीप से मिलता है, उसको हम लोग लोन में देने से तो हमको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ओके सर। ठीक है, गुड 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 गुड। अच्छा, इसलिए कासा रेशियो इज ज्यादा होने, दैट इज व्हाई ब्रांच पीपल आर मोर आफ्टर कासा रेशियो। समझ गया? सर या यस सर। अभी what is demand deposit, what is time deposit? Sir, demand deposit, there are the two types, that is saving account and current account. And time deposit have two types, that is fixed deposit and recurring deposit. See, the answer is not complete because you have to say demand deposits are these two deposits because they are repayable on demand. कभी भी डिमांड Yes, sir. देना है, लेकिन टाइम डिपॉजिट का मतलब इट इज रीपेएबल आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड। Specific time. समझ गया? ऐसा एक्सप्लेन करना है। Yes. Okay, गुड sir. गुड। कैन यू टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिनेंशियल इंक्लूजन? So actually, I have not read about it. फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये है to extend banking and insurance services to the poorest of the poor at cheaper rates. Government is aiming at this and they have offered the scheme Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, according to which bank account can be opened with nil balance. Not only Sir, that, people who are not having sufficient documents can also Sir. open basic savings bank account. I mean, small savings account. That is, after 6 months, they are supposed to give document for verification. And in the case of accounts opened with proper verification, like say Aadhaar card, etc., there is no prescription of minimum balance, but also they are eligible for loan of overdraft of 10,000 rupees. And towards achieving this, Reserve Bank of India is allowing opening of more branches of regional rural banks, and regional rural banks are appointing banking correspondents. And these banking correspondents take the POS to the house of the customer and make transactions. समझ गया? And Yes, sir. apart from that, small finance banks are also open today. There are 12 small finance banks in our country. Apart from that, payment banks are also allowed to be opened. So far today, we have 6 payment banks: Geo Payment Bank, Airtel Payment Bank, Paytm Payment Bank, then 2 more are there, some NDSL Payment Bank and another one. So there are 6 payment banks available in India. So, and not only that, through financial literacy campaign, लोग को फाइनेंस का बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, उन लोग के लिए सिखाने के लिए तो सब स्टेप्स बैंक्स आर टेकिंग। उसका बाद में schemes like Atal Pension Yojana, that is the pension scheme for unorganized employees, and also schemes like say PMSSBY, PMJJBY are being offered at cheaper rates. Here there is one scheme which is offered at 12 rupees only, where you get accident compensation of say rupees 2 lakhs on account of death. In the case of another thing, 2 lakhs life assurance is there for payment of premium of rupees only 330 rupees. All these schemes are aimed at giving coverage for people. समझ गया? Okay, sir. इसको थोड़ा पढ़ना है जी, पढ़ के आप प्रिपेयर करना है। Yes, sir. Yes, sir. Very good. Now, your husband is a civil engineer. Yes, sir. So, what is the position of civil engineering now in our country? How it is progressing? So it is very good in India. Mm. And so Is there a lot of demand or not? so obviously there is a lot of demand. कैसा demand है? Um, How will you say there is a lot of demand? Because government is spending so much money on infrastructure. yes, sir. Budget highlights देखना है इसमें। Yes, sir. Budget. बजट में क्या बोला है?
रोड तो ट्रांसपोर्ट। बजट में ही बोला है कि सर 25,000 किलोमीटर इनका टारगेट है गुड। इसका इस अलावा साल का। कितना रुपए उसके लिए अलॉट किया सर है? 20,000 करोड़। वेरी गुड, एक्सलेंट। ये इसका बीच में बैंकिंग के बारे में बात करने के समय पर कुछ गारंटी के बारे में बात होता है बजट में, वो क्या है? सर आई डोंट गारंटी। एमएसएमई स्कीम का अंदर में यस सर, ईसीएलजीएस बोल के एक स्कीम है, यस सर, इमरजेंसी यस सर। क्रेडिट लिंक्ड तो उसको गारंटी, 5, तो वो पहले, तो उसको extended up तो to उसको March 2023, यस and सर। guarantee cover of under ECLGS to be expanded by 50,000 सब crore to cover 5 lakh crore, ये सब 5 करोड़ है। सब पहले 5 3 lakh, थी, उसके बाद 5 lakh सब crore. पहले 3। हाँ, अच्छा, लाख करोड़ है। हाँ, एक्चुअली मैं यहीं पे कंफ्यूज हो रही थी। तो पहले Yeah, इसका सब पूरा पहले पूरा पढ़ना है. This question definitely will come. ओके सर। Then rupees 2 lakh crore of additional credit for micro small enterprises to be facilitated under credit guarantee trust for micro and small enterprises, CGTMSE. Then there is one scheme known as a ramp, raising and accelerating MSME program, ramp with an outlay of rupees 60,000 crore to be rolled out. Yes, sir. Are you having budget highlights? Yes or no? सर मैंने 1-2 बार पढ़े थे, लेकिन मुझे वापस रिकॉल करने की ज़रूरत है आई थिंक। अच्छा, are you having budget highlights with you? Otherwise, अभी सर एक्चुअली हाय सर है, आपका पास है? है मेरे यस सर, यूट्यूब पे वीडियो है, दिखती या हूँ। या गुड, वेरी गुड। तब क्या है, नो प्रॉब्लम। इसका अलावा, so only thing is you must be familiar with latest happenings. अच्छा, लता मंगेशकर, यस सर। please tell me about her. सर शी इज़ अ वेरी फेमस सिंगर। हम्म, और सब मुझे नहीं पता। थोड़ा पढ़ने से बढ़िया ना, हुँ, लता मंगेशकर बारे में थोड़ा पढ़ने से बड़े बड़े है। शी इज फ्रॉम विच स्टेट? सर आई डोंट नो सर, रियली मैंने अभी तक नहीं पढ़ा। पढ़ना है, अभी पढ़ना है, बिकॉज लता मंगेशकर born as हेमा मंगेशकर in 1929 was an Indian playback singer and occasional music composer. She is widely considered to have been one of the greatest and most influential singers in India. Her contribution to Indian music industry in a career spanning 7 decades, कितना साल? 70 साल, gained her यस सर। honorific titles such as Nightingale of India, Voice of Millennium, and Queen of Melody. And she was also given Bharat Ratna. She was also given Bharat Ratna, National Film Awards, then BFJA Awards, then so many awards she has got. Padma Bhushan, Dada Saheb Phalke Award, Maharashtra Bhushan, Padma Vibhushan, above all Bharat Ratna in 2001, and Office of the National Order of Legion of Honor 2006. I don't know which country has given this. उसको भी देख लीजिए. She was a member of parliament, Rajya Sabha. She was a member of parliament in Rajya Sabha, and she passed away recently. Excellent, excellent career. Can you remember one or two songs sung by her? यस सर। बताइए, first line बताइए. सर ज़रा याद करो कुर्बानी। No, you can और take time and tell me Lata Mangeshkar song, famous Lata Mangeshkar song. I am just putting here. Hello, just a minute. यस सर। Just try kar lo na. This question they will not ask. Don't worry. Just try karo. सर ए मेरे वतन के लोगों, ज़रा Hmm. याद करो उनकी कुर्बानी। Hmm. और सर, और सर एक एक तू ही है सहारा। अच्छा, और good. These are famous songs in your this thing. Here यस देखने सर। से इधर I am just clicking one.
So this is, but I'm not supposed to play, because that playback rights problem will be there. That's why I'm not playing Okay, that. sir. Yeah, that's very good. But get to know one or two songs, and if she has sung in Rajasthani, उसका बारे में सीख लीजिए. Rajasthani songs गाया है. She has sung in राजस्थान में Tamil सुन song. She has sung in Tamil language also. अच्छा, Yeah, and must be, I'll check up from Wikipedia or other source whether she has sung in Rajasthani. If it is there, definitely they will ask you. okay. Good, excellent. What are your hobbies? So cooking, Good, excellent. Then so only cooking. ऐसा मत बोलो ना, थोड़ा और कुछ बोलो ना. कुकिंग बोलो, सीरियल देखना बोलो, और न्यूज सुनना बोलो, और गार्डनिंग करना बोलो. अभी जब बच्चा पैदा हो जाएगा, टेकिंग केयर ऑफ बच्चा. हाँ, वो तो हॉबी नहीं है, फिर भी उसको ठीक से करो. ठीक है. Okay, गुड. okay, sir. डू यू वांट अ बॉय बेबी और अ गर्ल बेबी? So I want a normal, healthy baby. First pet is a healthy baby. That's it. एक्सलेंट एक्सलेंट. अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमारा गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कैसे, एनी इंप्रूवमेंट यू नीड इन दिस, कैन यू टेल मी? Sir, I have read one news about it. Sir, WHO ने सर सर जैसे कि आज के टाइम जैसे प्रेगनेंसी आफ्टर डिलीवरी यहाँ पे जैसे सर जो मतलब कि बहुत ज्यादा डेथ होती है न्यूबॉर्न बेबी की. तो सर उस चीज को रोकने के लिए उन्होंने कुछ रेगुलेशंस कुछ रिकमेंडेशंस दिए, जैसे कि सर एंटीनेटल कार्ड होता है. तो एंटीनेटल कार्ड से लोगों को जो वुमेन्स हैं उनको अधिक से अधिक उनको ज्यादा उनको जोड़ा जाए, उनकी कांटेक्ट बनाए और अपनी वो विजिट्स बढ़ाएं ताकि ये सारी चीजें कम हो. गुड 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 गुड, दैट्स ओके. नाउ लेट मी कम टू how many percentage you scored in your degree? So 73.55. Good, excellent, बढ़िया. अच्छा, what is your views in this regard? आजकल का women responsibility ज्यादा बढ़ता है, काम भी ज्यादा पड़ता है, लोग घर में भी काम करना पड़ता है, ऑफिस में भी काम करना पड़ता है. इज इट अ गुड साइन? और पहला काम अभी महिला खाली घर को देखेगा और मेल मेंबर्स वो दूसरा बाहर का काम देखेगा, वो बढ़िया होगा. आपका क्या आइडिया है? So to be independent, it is better. So सर that घर way. का काम भी करना, जॉब भी करना. आई थिंक दिस इज बेटर No, बिकॉज सर एक but in places like राजस्थान में तो आपको मेल मेंबर्स जॉब शेयर करेंगे. आजकल का बच्चा मेल मेंबर्स आर दे शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपका हस्बैंड को ऐसा सिखाया है? यस सर डेफिनेटली. अच्छा अच्छा, तब तो ठीक है. देन इट इज गुड, बढ़िया है. देन यू हैव आंसर्ड माय क्वेश्चन. Excellent. You have been answering my questions nicely, but I have asked only basic questions. You are able to answer well. Best wishes. You have the materials link provided by me, yes or no? यस सर. You are a member of my Telegram group for SBI. यस सर. यस So सर. be following that, be reading all the things, and go through the newspaper thoroughly. ओके सर. And what is the name of the cooperative bank that has been license cancelled now? Independence Cooperative Bank of Nasik, Maharashtra में. ओके. Okay. No, because that comes in newspaper, इसलिए उसका बारे में बताया. And आज और कल और परसों का क्या क्या न्यूज चलता है उसको हम लोग देख के मन में रखना है, so that if they ask, you can answer. Now at random, I'm just moving my cursor. Whatever question comes before me, I will ask. ओके सर. Yeah, this question is not related to you.
सर जैसे कि सर अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो मुझसे किस टाइप इसी टाइप के नॉर्मल क्वेश्चन? या रिगार्डिंग प्रेगनेंसी के बारे में पूछेगा, लाइक हाउ आर यू मैनेजिंग स्टडीज अलोंग विद दिस, and you are already 7 months pregnant, na? यस सर। When is your delivery expected, they will ask you. And are you taking sufficient precaution for taking care of the baby, they will ask you. And what are the steps taken by the government to take care of pregnant women, ओके सर। especially Rajasthan में क्या क्या schemes आए, and are you following them, and how to take care of the baby immediately after the birth, ऐसा भी पूछेगा, ओके सर। जरूर पूछेगा. Okay. यस सर। What are the newspapers you are reading? Don't tell me I don't read newspapers. सर पढ़ती थी Hmm. इंडियन एक्सप्रेस। अभी से शुरू करो ना. From today you start reading Indian Express. ओके सर। Expand DICGC. हेलो, हेलो। क्या हुआ? क्या हुआ सर कुछ तेरा नहीं हुआ। वादा, दुख some song is there na, like that. I think it is in film Anand or some such thing. Very old movie. यस सर। You were not born those days. अच्छा, DICG का expansion, Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation, इसका बारे में क्यों नहीं पढ़ा? बैंकिंग मटेरियल बहुत कुछ हमने दिया, पूरा क्यों नहीं पढ़ा? DICGC chairman is Patro, one of the deputy governors of RBI, and DICGC gives guarantee of rupees 5 lakhs for bank deposit in one name. समझ गया? यस सर। You have to read a lot, but you are answering well. I can imagine the plight of a woman with 7 years, sorry, 7 months, 7 years, 7 months baby, and what an amount of problems will be there, I know. But be cheerful, be happy, and always do prayers properly, and आपको यस सब सर। कुछ ठीक हो जाएगा. Which is your favorite God? So there is no particular. I mean, I just pray by only say God. That's it. Which is the God name? कुछ नाम बता दो ना. That is easier than telling I don't have any particular this thing, that thing and all. घर में क्या चीज के लिए बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं? लक्ष्मी को और शिव जी को और गणपति को जी सर और कार्तिक शिव को. जी मेरे भी शिव जी है सर। शिव जी. या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. Write 12 times every day ओके। till delivery. ओके सर। थैंक यू। That will help you. Best wishes. Thank you. थैंक यू सो मच सर। और कोई सजेशन No, suggestion और is कुछ? that you have to read something more about banking. You have to improve your current affairs, especially budget. Or on that interview day, you must appear to be more cheerful, happy. ओके सर। सर अच्छा, कॉन्फिडेंस लेवल तो सही है। confidence level is good. I will give you 8 out of 10 for confidence. And subject wise also, I will give you 8 out of 10. समझ गया? ओके सर। Good. Best wishes. I would like to see you getting. Which date is your interview? सर 10 फेब परसों ही अरे है। बाबा, पहले first date. यस सर। Very sad, because the problem is you don't know which type of questions they are going to. Are they going to ask ECE or are they going to ask banking? ये सब कुछ पता नहीं है. But आपको basically questions will be on pregnancy, family, husband, father. Then how will you manage mobility, and how will you be helpful for the bank? Why we should select you? बस इतना ही खत्म. आपको बैंकिंग का पास जाने का भी समय नहीं मिलेगा, बिकॉज इंटरव्यू 10-15 मिनट का ज्यादा नहीं होता है. हियर
हमने तो आधा घंटा किया होगा और 25 मिनट्स किया होगा, ठीक है? Yes, sir. God Okay, sir. bless you. I wish you success. Only one Thank you, sir. request, immediately after the interview से बाहर आने के बाद एक नोटबुक लेके क्वेश्चन सब डिटेल लिख दो, बाद में हमको व्हाट्सएप में भेज दो. I will share it with other children. Okay, sir. God bless you. Now, Thank you, sir. don't worry, I have given you 8 marks only. I want you to study more so that I have given you less mark. Yes, yes, no problem, sir. God bless you. Convey my enquiries to your husband and your mother-in-law, father-in-law, father, everybody. God bless them. Be good to them. Be cheerful. Be happy. Okay, sir. क्या कॉमेडी मूवी देखा आपने रिसेंटली? कुछ बताओ. सर मैंने लास्ट 4 ईयर से मैंने मूवीज कुछ भी नहीं देखा है, मतलब कि मैं प्रिपरेशन में आए मैंने अपनी टीवी देखना छोड़ दी है. टेलीविजन भी नहीं देखते हैं? नो सर, एक्चुअली इतना टाइम नहीं मिलता है. ठीक है, कोई बात नहीं. God bless you. Thank you. थैंक यू सर. Wish you success. थैंक Thank यू you. सर. Bye bye.